Asif wants to investigate the effect of different factors on the activity of salivary amylase. The most appropriate first step for Asif to undertake is to, in solving a biological problem, biologist takes following steps. Number 1, recognition of biological problem. Number 2, observations. Number 3, hypothesis formulation. Number 4, deductions. Number 5, experiment. Number 6, summarization of results. Number 7, reporting the results. Therefore, the correct answer is option C, that is formulate a hypothesis to test. Means option C is the correct answer. बाकी सारे ऑप्शंस हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट होने के बाद लिए जाते हैं. दैट इज टेस्ट अ वेरिएबल, पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी, गैदर एंड सेट अप द रिक्वायर्ड materials. That's why correct answer is option C. The first step for Asif to undertake is to formulate a hypothesis to test. Means option C is the correct answer. Next question. A scientist conducts an experiment to test the given hypothesis. A species of a plant produces more fruits when exposed to blue wavelength of light at night. In the experimental group, the scientist exposes 20 plants to blue light at night. What should the scientist do with the same number and species of plants used in the control group? As you know, experimental group and control group are treated exactly alike except for the variable being tested. Or you can say that an experimental group is the group that receives the variable being tested in an experiment, and the control group is the group in an experiment that does not receive the variable you are testing. यहाँ पे variable क्या है? Blue wavelength of light. सिंपल सी बात है, कंट्रोल ग्रुप में ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट में हम प्लांट को एक्सपोज नहीं करेंगे. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डू नॉट एक्सपोज देम टू ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट एट नाइट. मीन्स हमें उन प्लांट्स को ब्लू लाइट में एक्सपोज नहीं करना है. मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डू नॉट एक्सपोज देम टू ब्लू लाइट एट नाइट. In the given table, different sizes of blocks represent nutrients. Which of the following nutrients will be efficiently absorbed by the villi? The surface area to volume ratio gets smaller as the blocks gets larger. Small blocks of nutrients will be efficiently absorbed by the villi because small blocks of nutrients have high surface area to volume ratio. हमें स्मॉल ब्लॉक्स किस ऑप्शन में नजर आ रहे हैं? ऑप्शन ए में. और उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा? हाई. दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लेयर्स ऑफ फ्लैट एंड क्लोजली पैक्ड cells of stratified squamous epithelium are mainly significant to, as you know, stratified squamous epithelium has many layers of flat cells. It is present in the lining of esophagus and mouth and also over the skin. It protects the inner parts. That's why given options में से जो correct answer है वो है option B, that is provide protection against mechanical injury. Means option B is the correct answer. Next question. Which of the following characteristics of a cell determine its size and shape? Given options में से जो correct answer है वो है option A, that is location and function. Means option A is the correct answer. As you know, red blood cells are round to accommodate globular hemoglobin. Nerve cells are long for the transmission of nerve impulse. Xylem cells are tube-like and have thick walls
for conduction of water and support. Means option A, location and function is the correct answer. Next question. Use the given key to answer the following question. Lipid bilayer, protein channels, movement of molecules, glucose molecules. The diagram that correctly represents the movement of glucose molecules into red blood cells through the process of facilitated diffusion is, as you know, when a protein channel moves a substance from higher to lower concentration, the process is called facilitated diffusion. प्रोटीन चैनल की मदद से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को मूव करना चाहिए। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में हमें प्रोटीन चैनल्स नज़र नहीं आ रहे। ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मूव करना चाहिए फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में, जबकि ऑप्शन बी में लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। जबकि ऑप्शन ए में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन और प्रोटीन चैनल्स की मदद से। दैट्स वाई ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, जो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के प्रोसेस को। मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द गिवन डायग्राम shows the condition of human red blood cells when kept in sucrose solution. Note the internal concentration of red blood cell is 0.9%. The concentration of sucrose solution in this situation would be, as you know, when an animal cell such as red blood cell is placed in an isotonic solution, the cell volume remains constant because the rate at which water is entering cell is equal to the rate at which it is moving out. When a cell is placed in a hypotonic solution, water enters and cell swells and may rupture like an overfilled balloon. Similarly, an animal cell placed in a hypertonic solution will lose water and will shrink in size. हमें रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे किससे नज़र आ रहे हैं? रप्चर्ड नज़र आ रहे हैं। मीन्स हमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पहचानना है। इंटरनल कंसंट्रेशन 0.9 है। मीन्स हमें ऐसा आंसर शॉर्टलिस्ट करना है जिसमें कंसंट्रेशन की वैल्यू 0.9 से कम हो, जो हाइपोटोनिक हो, जो ऑप्शन डी रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन को, मीन्स सेम कंसंट्रेशन है, और ऑप्शन ए और बी हाइपरटोनिक को। हमें सेल्स रप्चर्ड नजर आ रहे, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ प्लांट सेल. The part of the cell which is composed of cellulose is labeled as you know, cell wall is composed of cellulose, जो ऑप्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ऑप्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को, ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है गोल्जी अपैरेटस को, और ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट को। हमें सेल वॉल को आइडेंटिफाई करना था, जो ऑप्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ATP hydrolysis provides energy to transport the substances against their concentration gradient. If ATP hydrolysis is inhibited, then which of the following will not be able to transport through the cell? ATP एनर्जी प्रोवाइड करता है सब्सटेंसेस को मूव करने में अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मींस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अगर ATP हाइड्रोलिसिस इनहिबिटेड है तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकेगा?
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज sodium ions. Means option B, sodium ions is the correct answer. As you know, in the membranes of nerve cells, sodium potassium pump carries out a form of active transport, that is, its pumping of ions against their gradient requires the addition of energy from an outside source. That source is ATP, adenosine triphosphate, the principal energy carrying molecule of the cell. That's why correct answer is option B, that is sodium ions. Next question. Following are the structural features of three different organelles. Number 1, its outer membrane is smooth, but the inner membrane forms many enfoldings. Number 2, it is composed of 9 triplets of microtubules. Number 3, it consists of a set of flattened sacs that are stacked over each other. The option that correctly identifies organelles 1, 2 and 3 is many इनफोल्डिंग से हमने आइडेंटिफाई किया, 1 is mitochondria. 9 triplets of microtubule से हमने आइडेंटिफाई किया सेंट्रियोल्स. दोनों करेक्ट ऑप्शन डी में थे, तो मीन्स थर्ड इज गोल्जी अपैरेटस. वैसे हम फ्लैटन सेक्स से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं गोल्जी अपैरेटस को. मीन्स ऑप्शन डी जो है करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है तीनों ऑर्गेनेल्स को. दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. In light-dependent reactions of photosynthesis, the number of water molecules that produces 2 oxygen molecules during photolysis is, in the balanced equation, 2 molecules of water produce 1 molecule of oxygen. हमसे पूछा गया है 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेंगे. 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन का, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेंगे 2 oxygen molecules. That's why option C 4 is the correct answer. 4 molecules of water produce 2 oxygen molecules. Next question. The given flow chart shows different processes involved in the energy transformation in plants. Formation of glucose, process 1. Oxidation of food, process 2. Storage of energy. Which of the following is correct about the flow of energy at process 1 and 2? Process 1 represent कर रहा है photosynthesis को. As you know, photosynthesis is the synthesis of glucose from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll with oxygen as a byproduct. Means input of light energy is shortlisted. Process 1 के लिए. Process 2 oxidation of food is respiration. As you know, cellular respiration is the process by which foods are oxidized in the presence of oxygen to produce or release large amount of energy to drive the bulk production of ATP. तो release of heat energy shortlist हो गया. हमारे दोनों करेक्ट आंसर ऑप्शन ए शो कर रहा है. That's why A is the correct answer. Next question. Which of the following conditions causes the accumulation of ATP and NADPH in the stroma of an illuminated chloroplast? Absence of carbon dioxide would block the dark reaction Calvin cycle during which ATP and NADPH are used to reduce 3 carbon compounds. If there is no carbon dioxide, means no dark reaction or Calvin cycle, because of which ATP and NADPH accumulate in stoma of chloroplast. That's why option D, absence of carbon dioxide, is the correct answer. Next question. In light-dependent reactions of photosynthesis, the source of electrons for NADPH is. गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज वाटर. As you can see in picture also,
As you know, when chlorophyll molecules absorb light, their energy level increases and their electrons are emitted. Electrons are passed to electron transport chain to produce ATP. Light also breaks water molecule photolysis and oxygen is released. The hydrogen atoms of water give electrons to chlorophyll and become ions. The electrons of chlorophyll after the production of ATP and the hydrogen ions of water are used for the reduction of NADP into NADPH. That's why option C, water, is the correct answer. Next question. The given graph shows the blood lactic acid concentration of an athlete before, during, and after a race. Blood lactic acid concentration, millimoles per liter, time in seconds. The sections of graph which show anaerobic respiration during the race are, as you know, during anaerobic respiration, each pyroic acid molecule is converted into lactic acid. जब जब लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी तब तक एनाएरोबिक रिस्पायरेशन हुआ होगा मीन्स पी से क्यू और आर से एस जो ऑप्शन सी शो कर है दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन The given graph illustrates the effect of carbon dioxide gas CO2 concentration on the rate of photosynthesis, carbon dioxide gas concentration. The regions at which the carbon dioxide concentration does not act as a limiting factor is /R. As you know, as the carbon dioxide concentration rises, the rate of photosynthesis goes on increasing until limited by other factors. यहाँ पे भी हमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ी यहाँ पर भी जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ी मगर यहाँ पे हमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है चाहे हम कितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा लें मीन्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लिमिटिंग फैक्टर नहीं है दैट्स वाई ऑप्शन सी 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर Next question. The given bar graph shows the average number of chloroplasts in three different types of leaf cells 1, 2 and 3. Average number of chloroplasts in each cell, leaf cells. Based on the average number of chloroplasts, the option that identifies leaf cells 1, 2 and 3 is palisade mesophyll cells contain the largest number of chloroplasts per cell. Means 2 is palisade mesophyll cell उससे कम होते हैं स्पंजी mesophyll सेल में और सबसे कम गार्ड सेल में जो ऑप्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज डैमेज्ड इन अ न्यूली डेवलप्ड सेल then the structures which will be immediately affected due to this damage is /R. As you know, chloroplast is bounded by a double membrane. The outer membrane is smooth while the inner membrane gives rise to sacs called thylakoids. The stack of thylakoids is called grana. That's why correct answer is option C. That is thylakoid. If inner membrane is damaged, then immediately affected is thylakoid. Means immediately affected structure is thylakoid. Means option C, thylakoid is the correct answer. The given table shows the composition of inspired and expired air in humans. The percentage of nitrogen in expired air is nitrogen की percentage
इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर में सेम रहती है. दैट्स वाई ऑप्शन बी 79% इज द करेक्ट आंसर. ऑक्सीजन की परसेंटेज डिक्रीज हो जाती है एक्सपायर्ड एयर में और कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज, जबकि नाइट्रोजन की सेम रहती है. दैट्स वाई ऑप्शन बी 79% इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the human respiratory system, the structure X warms and filters the inspired air, whereas the structure Y is associated with the gaseous exchange. The option which correctly identifies the structure X and Y is structure X, nasal cavity. As you know, nasal cavity is divided into two portions by a wall. Each portion is lined by fine hairs and mucus, which filter the dust particles from the air. The mucus warms the incoming air and keeps its temperature nearly equal to that of the body. Structure-wise alveoli. As you know, alveoli are tiny sacs located at the end of the respiratory tract in the lungs that allow inhaled oxygen to enter the bloodstream and carbon dioxide to leave the bloodstream with exhalation. That's why option A is the correct answer. Structure X is nasal cavity and structure Y is alveoli. Means option A is the correct answer. Next question. Which of the following physiological conditions can block the upper respiratory passages in the human respiratory system? As you know, glottis is a narrow opening at the floor of pharynx which leads into larynx. The glottis is guarded by a flap of tissue called the epiglottis. If epiglottis swollen severely, then it can block the upper respiratory passages. That's why given options में से जो correct answer है वो है option A, that is severely swollen epiglottis. Means option A is the correct answer. Next question. Given are some of the features of an organ involved in the breathing mechanism of humans. It is located below lungs. It is composed of skeletal muscles. It contracts and relaxes while breathing. Based on the given features, this organ is identified as located below lungs. हमने identify किया. Given options में से जो correct answer है वो है option C, that is diaphragm. Option C, diaphragm is the correct answer. The option which correctly identifies the component of a secretion which neutralizes the acidic chyme in duodenum and the source of this secretion is, as you know, the digestive aid that neutralizes the acidity of chyme is sodium bicarbonate. This digestive aid is secreted by the pancreas in response to secretin, a hormone secreted by the duodenum which stimulates the release of large quantities of sodium bicarbonate by the pancreas. That's why correct answer is option C. Component of secretion bicarbonates, source of secretion pancreas. Means option C is the correct answer. Next question. A nutritionist recommends a male adult to consume liver, beans and red meat regularly in his diet to overcome the following symptoms: pale skin, shortness of breath, tiredness and lethargy. With reference to the given information, the adult person's body has a deficiency of. गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज आयरन. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टायर्डनेस एंड लिथार्जी से हमने पहचाना करेक्ट ऑप्शन आयरन है. एज यू नो, आयरन इज अ मिनरल दैट द बॉडी नीड्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट.
Body uses iron to make hemoglobin, a protein in red blood cells that carries oxygen from the lungs to all parts of the body, and myoglobin, a protein that provides oxygen to muscles. That's why iron, option A, is the correct answer. Next question. Which of the following characteristics of the human digestive system provides protection against pathogens? गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज द रिलीज ऑफ एसिड इन द स्टमक. मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. As you know, when food enters stomach, the gastric glands found in the stomach wall are stimulated to secrete gastric juice. Gastric juice is composed chiefly of mucus, hydrochloric acid, and a protein digesting enzyme pepsinogen. Hydrochloric acid converts the inactive enzyme pepsinogen into its active form, that is pepsin. Hydrochloric acid, that is HCl, also kills microorganisms present in food. That's why option A, the release of acid in the stomach, is the correct answer, which provides protection against pathogens. Next question. The acidic nature of chyme is changed to alkaline in order to. गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज प्रोवाइड ऑप्टिमम पीएच फॉर ट्रिप्सिन टू वर्क. मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. As you know, all enzymes work at their maximum rate at a narrow range of pH called as the optimum pH. A slight change in this pH causes retardation in enzyme activity or blocks it completely. Every enzyme has its specific optimum pH value. For example, trypsin shows its activity in alkaline medium. That's why acidic nature of chyme is changed to alkaline in order to provide optimum pH for trypsin to work. That's why option D, provide optimum pH for trypsin to work, is the correct answer. Next question. Which of the following statements is correct about the chemical digestion in the human alimentary canal? As you know, chemical digestion is the breakdown of large insoluble food molecules into small soluble food molecules so that they can be absorbed into blood plasma. That's why given options में से जो correct answer है वो है option B, that is proteins are digested in the stomach and small intestine. Means option B is the correct answer. Next question. The given diagram represents the longitudinal section of a human villus. Blood from the vessel X enters into the vessel X से blood कहाँ enter होगा? गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज hepatic portal vein. Means option C, hepatic portal vein is the correct answer. As you know, the digested molecules, that is simple sugars and amino acids, are absorbed from intestine into the blood capillaries present in villi. Blood carries them away from small intestine via the hepatic portal vein and goes to liver for filtering. Here, toxins are removed and extra food is stored. From liver, the required food molecules go towards heart via the hepatic vein. That's why correct answer is option C, that is hepatic portal vein. Next question.
Which of the following options is correct about the movement of the soft palate and the larynx during swallowing? जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज सॉफ्ट पैलेट अप, larynx up. Means option A is the correct answer. As you know, during swallowing, bolus is pushed to the back of mouth by tongue. When tongue pushes bolus, the soft palate also moves upward and to rear. In this way, the opening of nasal cavity is closed. When swallowed, the bolus passes pharynx to enter esophagus. Pharynx has adaptations to prevent the entry of bolus particles in trachea. During swallowing, larynx moves upward and forces the epiglottis into horizontal position. Thus, glottis, that is the opening of trachea, is closed. That's why option A, up, is the correct answer. Next question. All of the following minerals are examples of macronutrients required for plants except नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एग्जाम्पल्स है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, एक्सेप्ट सी मैग्नीज जो मैक्रोन्यूट्रिएंट की एग्जाम्पल नहीं. दैट्स वाई ऑप्शन सी मैग्नीज इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the human digestive system, X is a chemical secretion that contains enzyme which digests fats. The option which correctly identifies X, the enzyme it contains, and the site of action for the enzyme is, as you know, pancreatic juice from pancreas contains enzymes trypsin, pancreatic amylase and lipase which digest proteins, carbohydrates and lipids respectively. लाइपेस डाइजेस्ट करता है फैट्स को, इसलिए ऑप्शन ए और बी शॉर्टलिस्ट हो गए. पैंक्रियाटिक जूस केमिकल सिक्रीशन है और साइट ऑफ एक्शन इज डिओडिनम. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. The laboratory test of a blood sample reveals the presence of anti-B antibodies in the blood plasma. This blood sample can be successfully transfused into a person having blood group anti-B antibodies presence से मतलब डोनर का ब्लड ग्रुप ए है. A donor with blood group A can donate to person with blood groups A and AB, जो ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट्स वाई ऑप्शन सी ए और ए बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द ह्यूमन ब्लड the antigens for Rh factor are present. As you know, the antigens for Rh factor are present on the plasma membrane of red blood cells. That's why option C is the correct answer. The antigens for Rh factor are present on the plasma membrane of red blood cells. Next question. The normal pulse rate for a healthy adult in a resting condition ranges from, given options में से जो correct answer है वो है option B, that is 60 to 100. Means option B is the correct answer. Next question. During blood circulation through atria and ventricles, valves open or close. The opening or closing of valves is mainly due to the, given options में से जो correct answer है वो है option B, that is pressure differences on either side of the valves.
means option B is the correct answer. Next question. The given events occur during the circulation of blood through atria and ventricles of the heart. 1. Blood is pushed into the aorta. 2. Aortic semilunar valves are opened. 3. Pulmonary semilunar valves are closed. 4. Arterioventricular valves are pushed open. Which of these given events occur when the left atrium contracts? वैसे तो ये सारे इवेंट्स करेक्ट है, बट हमें उन इवेंट्स को चूज करना है जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो जो करेक्ट है वो 0.3 और 0.4 है. दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर. Blood is pushed into the aorta is wrong. Blood is pushed into left ventricle. Aortic semilunar valves are open. Incorrect है. Aortic semilunar valves are closed. करेक्ट होता. क्योंकि यहाँ ओपन लिखा है इसलिए ये इनकरेक्ट है. मीन्स 1 2 इनकरेक्ट है, 3 4 करेक्ट है. जब ब्लड मूव करेगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन इज द पाथवे ऑफ ब्लड in the circulatory system of the human body. Right atrium to right ventricle, lungs. The given pathway shows the circulation of right atrium और right ventricle में deoxygenated blood होता है. मीन्स ऑप्शन ए और बी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा हुआ है. और लंग्स में जा रहा है मीन्स हार्ट से लंग्स है. ऑप्शन ए में लिखा है लंग्स टू हार्ट, ऑप्शन डी में भी, तो ए और डी भी इनकरेक्ट है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन सी, दैट इज deoxygenated blood from the heart to lungs, means option C is the correct answer. Next question. Consider the given images. The image of diseased artery represents normal artery, diseased artery. ब्लैक नजर आ रहा है. गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज arthrosclerosis, means option C is the correct answer. As you know, arthrosclerosis is commonly referred to as a narrowing of arteries. It is a chronic disease in which there is accumulation of fatty materials, cholesterol or fibrin in arteries. Accumulation of cholesterol is the prime contributor to arthrosclerosis. It results in the formation of multiple deposits called plaques within arteries. That's why option C is the correct answer. Next question. The cells that transport organic nutrients from leaves to the other parts of a plant are, as you know, phloem is responsible for transporting food substance throughout plant body. That's why option D, sieve tubes and companion cells is the correct answer. Vessels and tracheids इनकरेक्ट है जिस वजह से ऑप्शन ए बी सी गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट अबाउट thrombocytes? As you know, platelets, thrombocytes are not cells but are fragments of large cells of bone marrow called megakaryocytes. They do not have any nucleus and any pigment. The average lifespan of a blood platelet is about 7 to 8 days. Means 7 to 8 days शॉर्टलिस्ट हो गया. ए और सी शॉर्टलिस्ट हो गए. न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है और पिगमेंट भी एब्सेंट होता है. हमारे सारे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में थे. दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर. दैट इज न्यूक्लियस एब्सेंट, पिगमेंट एब्सेंट, लाइफ स्पैन 7 to 8 days.
alternate to practical ATP. Submarine is given three objective lenses with magnification powers 10x, 100x, and 40x, respectively, to observe a specimen under the light microscope. The correct order of magnification that submarine should use to observe the specimen is, as you know, it's important to start with the lowest magnification possible so you can easily find the specimen on the slide, and gradually focus it before increasing the magnification to see the specimen more closely. तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? लोवेस्ट मैग्निफिकेशन से, मीन्स फर्स्ट 10x, देन हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे 40x पे, देन 100x. ऑप्शन ए करेक्ट सीक्वेंस को शो कर रहा है, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the given diagram of the transverse section of a dicot stem, parenchyma tissues are labeled as you know, ground tissues are simple tissues made up of parenchyma cells. Parenchyma cells are the most abundant cells in plants. Overall, they are spherical but flat at point of contact. तो हमें ऐसे सेल्स कहाँ नजर आ रहे? ऑप्शन डी में. That's why option D is the correct answer, जो पैरेनकाइमा टिश्यूज को शो कर रहा है. ऑप्शन ए एपिडर्मल टिश्यूज को शो कर रहा है. ऑप्शन बी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज को शो कर रहा है. ऑप्शन सी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट इज जाइलम टिश्यूज को शो कर रहा है. तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, जो पैरेनकाइमा टिश्यूज को शो कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The given table represents initial and final masses of potato cubes before and after keeping them in 4 different concentrations of salt solutions labeled as 1, 2, 3 and 4. The salt solution that is hypotonic to the potato cubes is, जो salt solution hypotonic होगा वहाँ हमें final mass increase नजर आएगा, जो ऑप्शन 1 रिप्रेजेंट कर रहा है. इनिशियल मास 12 है और फाइनल मास 15 है, मीन्स फाइनल मास में इंक्रीज हुआ. तो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी में मास में कोई इंक्रीज नहीं है, मीन्स ऑप्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोटोनिक को. ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 के अंदर हमें फाइनल मास में डिक्रीज नजर आ रहा है, मीन्स ये कौन से सॉल्ट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करें? हाइपरटोनिक को. हमसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पूछा गया था, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए. एज यू नो, इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर टेंड्स टू मूव फर्स्ट इनसाइड सेल एंड देन इनसाइड वैक्यूल. एज अ रिजल्ट सेल swells up. In isotonic environment, the net uptake of water is not enough to make the cell turgid and it is flaccid. In a hypertonic environment, a plant cell loses water and cytoplasm shrinks. The shrinking of cytoplasm is called plasmolysis. So the correct answer is option A, जिसमें हमें final mass में increase नजर आ रहा है, means A is the correct answer. Next question. Selma wants to conduct an experiment to investigate that chlorophyll is necessary for photosynthesis. To carry out the experiment, she takes 4 different leaves labeled as A, B, C, and D. Which of the following leaves should Selma select to carry out the experiment? As you know, a variegated leaf is used to investigate the factor necessary for photosynthesis because variegated leaves have green parts where the cells contain chlorophyll and white part where there is no chlorophyll. Only the parts that were green become blue-black with iodine solution, showing the importance of chlorophyll in photosynthesis. तो हमें वेरीगेटेड लीफ किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? ऑप्शन ए में. दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप.
Oxygen gas bubbles will not be produced in the test tube if the, as you know, we use this experimental setup for the demonstration of photosynthesis. As you know, photosynthesis is the synthesis of glucose from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll with oxygen as a byproduct. हमसे पूछा गया है कब ऑक्सीजन बबल्स नहीं प्रोड्यूस्ड होंगे। अगर हम टेस्ट ट्यूब को कवर कर देते हैं ब्लैक पेपर से तो भी फोटोसिंथेसिस होगा। क्यों? क्योंकि बीकर तो कवर नहीं है ब्लैक पेपर से, प्लांट को सनलाइट तो मिल रही है, मीन्स फोटोसिंथेसिस होगा। तो ऑप्शन बी में भी ऑक्सीजन बबल्स प्रोड्यूस्ड होंगे। अगर हम हाइड्रिला प्लांट को रिप्लेस कर देते किसी और एक्वेटिक प्लांट से तो भी बबल्स प्रोड्यूस होंगे क्योंकि हर प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं इन डी लाइट। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को रिप्लेस कर देते हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट से तो भी फोटोसिंथेसिस होगा क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट दोनों प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बीकर इज फिल्ड विथ डिस्टिल वाटर। अगर बीकर में सिर्फ डिस्टिल वाटर होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ऑक्सीजन के बबल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। दैट्स वाई ऑप्शन ए, बीकर इज फिल्ड विद डिस्टिल वाटर इज द करेक्ट आंसर। अगर बीकर को सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल वाटर से फिल कर देंगे तो ऑक्सीजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड में गैस नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Misbah has set the apparatus in the following way to investigate the release of heat during aerobic respiration in germinating seeds. Which of the following reactions will take place in vacuum flask 1? वैक्यूम फ्लास्क 1 में जर्मिनेटिंग सीड्स है और वैक्यूम फ्लास्क 2 में बॉइल्ड सीड है। यहाँ पे हमें टेम्परेचर यहाँ तक नज़र आ रहा है और जर्मिनेटिंग सीड्स में थोड़ा सा राइज हुआ नज़र आ रहा है, मीन्स हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है जर्मिनेटिंग सीड्स वाली फ्लास्क में। और हमें एनर्जी कहाँ नज़र आ रही है? ऑप्शन डी में। दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। हमें वैक्यूम फ्लास्क 1 में रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी। एज यू नो, cellular respiration is the process by which substance, food are oxidized in the presence of oxygen to produce or release large amount of energy to drive the bulk production of ATP। और हमें एनर्जी ऑप्शन डी में नज़र आ रही है और रिस्पायरेशन का प्रोसेस, रिस्पायरेशन की इक्वेशन भी ऑप्शन डी में नज़र आ रही है। दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the given table represents the results obtained after the biochemical tests that were carried out on different food samples. Sample WXYZ, Benedict test result, Biuret test result. The inference that is best supported by the given table is that the food sample, as you know, Benedict's test is a chemical test that can be used to check for the presence of reducing sugars in a given analyte, and Biuret test is a chemical test that can be used to check for the presence of proteins in a given analyte. Option A is excess egg white। अगर X egg white है, egg white consist of proteins, तो बायूरिक टेस्ट को पॉजिटिव आना चाहिए था, यहाँ पे नेगेटिव है, मीन्स ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, जेड इज कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इज 100% फैट और फैट को चेक करने के लिए यहाँ कोई भी टेस्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए बी भी इनकरेक्ट है। सी इज वाई इज एन एप्पल जूस। अगर वाई एप्पल जूस है तो बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि एप्पल जूस में रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, जबकि यहाँ पे बेनेडिक्ट टेस्ट वाई के लिए नेगेटिव है, मीन्स ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी इज
W is an orange juice. W में बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव है और बायूरिक टेस्ट नेगेटिव है. That's why option D is the correct answer. Next question. A student performs Benedict's test on 4 different samples in test tubes labeled as A, B, C, and D, containing varied concentrations of reducing sugars. Based on the test result in the given table, the test tube which contains the highest concentration of reducing sugar is. Red color shows the highest concentration of reducing sugar. Red color option D में. That's why option D is the correct answer. Next question. A student observes the given microscopic image of a human villus. The labeled part that represents a mucus secreting cell is. As you know, goblet cells is a column-shaped cell. Primary function is to synthesize and secrete mucus. और goblet cell हमें कहाँ नजर आ रहा है ऑप्शन ए में. That's why A is the correct answer. हमने इस शेप को देख के आइडेंटिफाई किया. Next question. A student performs an experiment to investigate the rate of transpiration at the upper and lower epidermis of a leaf by using a cobalt chloride paper. All the experimental conditions are kept constant. The result of the experiment is illustrated using the given graph. Rate of transpiration, light intensity, lower epidermis, upper epidermis. Which of the following statements correctly infers the graph? As you know, transpiration is closely related to stomata. Nearly 97% of water from plants is lost through stomatal transpiration. So, the more stomata, the higher the transpiration rate. ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हमें कहाँ नज़र आ रहा है लोअर एपिडर्मिस में. दैट्स वाई गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज लोअर एपिडर्मिस हैज large number of stomata. Means option B is the correct answer.